Hi guys, welcome back. I'm your host Dr. Seema Jain. I'm a SEBI-registered research analyst and आज हम बात करेंगे long building, short building, long unwinding, short unwinding. राइट ये क्या होती हैं चार टर्म्स। सबसे पहले बात होती है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? राइट ओपन इंटरेस्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। और ओपन इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं ना तो हम बात करते हैं एफएनओ स्टॉक्स की। हम कैश के स्टॉक्स की बात जनरली नहीं करते। तो अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के स्टॉक की बात करोगे तो आप उनका एक लॉट बाय कर सकते हो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 3 महीने के ज्यादातर किसी भी स्टॉक के। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, अदानी है, एचडीएफसी बैंक है। दीज आर ऑल देयर अबाउट रफली 190 to 200 एफएनओ स्टॉक्स व्हिच हैव उनकी एक्सपायरी जो है आप उसका एक लॉट होल्ड कर सकते हो 3 महीने के लिए, राइट। और उनके ऑप्शंस होते हैं। एफएनओ स्टॉक्स में जितने भी स्टॉक्स जिनके फ्यूचर्स होते हैं उनके ऑप्शंस होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम उनको हेज करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस के कुछ 500 स्टॉक है अगर मान लेते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, या मैं अदानी की बात करती हूँ, अदानी का जस्ट क्विकली आई वुड लाइक टू सी द लॉट साइज इज 500। सो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अदानी। I have bought Adani stock somewhere here. यहाँ पे कहीं पे मैंने बाय किया है 1785 या 1800 के आसपास कहीं पे बाय किया है। 500 स्टॉक मैंने बाय किए हैं। Now what's going to happen? The stock is going up, right? When the stock goes up, it's called long build up, right? Stock में long build up हो रहा है। People are buying every time, every day people are creating long positions. मतलब they are buying futures, right? And that is called long build up. लॉन्ग बिल्डअप के समय आप क्या क्या चीजें कर सकते हो? एक तो पुट को सेल कर सकते हो। यहाँ पे पुट सेल की, यहाँ पे पुट सेल की, यहाँ पे पुट सेल करी। जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है आप पुट को सेल कर रहे हो, राइट। दैट्स कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप, राइट। ये लॉन्ग बिल्डअप है। फिर यहाँ पे आ गए, राइट। यहाँ पे क्या है, मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। जब मार्केट नीचे गिरने लगती है तो जिन लोगों ने बाय कर रखा है उनके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, राइट। मतलब मैंने अगर एक लॉट अदानी का बाय कर रखा है तो मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तो मैं क्या करूंगी, उसको सेल करूंगी, राइट। दैट्स कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग, राइट। आई विल सेल दिस लॉन्ग अनवाइंडिंग। एंड और ये भी हो सकता है कि अगर मेरे को कंफर्मेशन मिल जाता है मैं एक सेल का ट्रेड क्रिएट कर दूं। फ्यूचर्स में आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। अदानी का एक लॉट आप सेल कर सकते हो। तो सपोज नाउ बहुत सारे सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो है कि मेरे पास अदानी का कैश है, राइट। अदानी का कैश स्टॉक है, मैंने यहाँ पे खरीदा कहीं पे। आई वांट टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट, राइट। तो व्हाट कैन आई डू? I can, along with, because I am a directional trader, my view is long on this, so I will buy its futures and sell the put option. 1700 1800 put option I'll sell. As the price will go on up and up, I will keep selling 1900 2000 2100 and so on and so forth. और यहाँ पे आके जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आने लगता है, I will exit my Adani's long position. That's one thing I will do. I may create a short as well. If I get the confirmation, I will create a short. That's called short buildup. यहाँ तक short buildup हुआ और यहाँ पे आके short जो है unwind होने लगे। मतलब जिन लोगों ने sell किया हुआ है वो लोग unwind कर रहे हैं, अपनी sell की position से exit कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अब थोड़ा सा long buildup शुरू हो गया, right? Hope you understood. This is called distribution. This is called accumulation. This is called long build up. This is called long unwinding. This is called short build up. This is called short unwinding. And now long build up, right? All the four things you have understood. This is long build up, right? So this is long build up. This is long unwinding. Long unwinding. This is short build up, SB. This is short unwinding, SU. And this is long build up, right? All the four conditions you have understood, right? अब हम इसको यूज, इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करें? द क्वेश्चन इज हाउ डू वी यूज दिस इंफॉर्मेशन। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। जब प्राइस हॉरिजॉन्टल चला जाए आप अपने कॉल ऑप्शन को एग्जिट कर सकते हैं।
यहाँ पे जाके आप कॉल सेल कर सकते हैं या पुट को बाय कर सकते हैं, राइट? दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू, राइट? तो आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में आप बहुत तरीके से खेल सकते हो, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप कर सकते हो. Or besides that, you can keep selling put call option at different levels. You sell at 2400 call option, then you sell 2300 call option, then you sell 2200 call option, then 2100 call option. Now you can sell 2000 put option, because now you see there is short unwinding happening. Now you sell 2000 put option. So that is how you work with option selling, right? So what I was wanting to tell you, suppose I have 500 stock of Adani and मुझे यहाँ पे आके लगता है, इस जगह पे आके लगता है कि अदानी में जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, राइट? बट जो मैंने 500 स्टॉक खरीद रखे हैं मुझे वो एग्जिट नहीं करने हैं. तो व्हाट विल आई डू? आई विल sell the futures, right? What will I do? I'll sell a lot of future, right? Or I will buy a put option. Better than buying a put option is selling the futures lot, right? Because there wouldn't be any premium decay. So that is how you will be able to protect the capital gain that you had from here to here. You will be able to recover. And when again you see a accumulation happening, you can exit your sell position and continue. So that is how you minimize your losses for long-term investments, right? So this is something that I wanted to explain you about long build-up, short build-up, long unwinding, short unwinding. एंड उसके बाद आप डिफरेंट वे से अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हो, राइट? सो आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो आज है 17th of May 2022 and huge amount of short covering has taken place. A lot of people who have shorted, like have a look at it. VDL was badly shorted. Today there has been an unwinding, right? There is rather unwinding के बाद long build up शुरू हो गया. Intellect, there was a huge shorting. Today there has been unwinding. Hind Copper, huge shorting के बाद unwinding हो रही है. Hindalco, similar situation. It's been falling down for last 1.5 months. Today it has unwinded. LTTS, similar situation. National Aluminium, similar situation. Rain Industries, similar situation. Tata Steel has been also continuously falling down. Today there has been huge amount of buying taken place. Every stock, right? So hope you have understood कि open interest कैसे build up होता है. Like for example, I have sold put options, I have sold call options. So these are open interest. I have created an open interest, right? So ये open positions है, right? These are not closed. So they are creating open interest. Now with this information, what I want to give you 3 stocks for next few days. तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है जिसने एक अच्छी सी रिकवरी दिखाई है वो है HCL Tech, right? HCL Technologies. This is HCL Tech. Look at how the price is almost stagnant for quite some time, and today huge amount of buying has taken place above 1085. I'm definitely expect a good move in this particular stock. Keep it in your watch list. Choice is yours. You feel convinced about buying above 1085, you can go for it. Otherwise, take a call. But from my side, I'm finding the stock good, but you have to make your own judgment. I don't want to hear in the comment box that your all research is bad. Your entry may be bad, but the stock that I'm selecting are not bad, right? I'm doing a lot of research based on a lot of factors, but if market doesn't support, you have to take a wise decision. Then the next stock that I have on my radar is Godrej CP, right? Have a look at Godrej CP. This is a barrier, right? The closest barrier that it has is about 833. Above 833, I definitely feel there should be a huge move in this stock. Then the third stock that I want to give you is AU Bank, which has not given a breakout today, in spite of Bank Nifty moving very beautifully. But above 1326 or 1330, we definitely can expect an up move in AU Bank. So HCL Tech, Godrej CP and AU Bank. These are my 3 stocks which are going to be on radar for a few days. And besides that, I have given 6 more stocks. Coromandel, MRF, again Godrej CP I had given, and then I had given Escorts, I have given Ambuja Cement and Hindu Unilever. These are the 6 stocks I had given yesterday. So 6 plus 2 more, 8 stocks on my radar.
keep watching them. If a breakout comes, go for it, but do it wisely. Market need to be positive to support your decision. So just keep watching Nifty and Bank Nifty so that you don't take a wrong decision. With this, I'm signing off. Keep learning, keep earning, and be present on my Telegram channel when I'm super active and we do some wonderful analysis and good trades. I have given a live trade on Delta Corp today. Delta Corp, we bought it about 232 and it made a high of 244, right? Almost like 12 points in a small valued stock. Huge movement, and we did a lot of trading today. You can come to the Telegram channel and have a look at it, whatever stocks that we have taken. We bought Sumitomo Chemicals, we bought India Glycol, we bought Hunt Unilever, we bought Eicher Motors, a lot of stocks. So keep learning, keep earning, and join me on the Telegram channel. Link you will get in the description box. In case the link is not working, call up on the WhatsApp number given in the description box and you will be able to connect with my team. They will help you out. All the best. Take care. See you. Do not fall prey to a channel which is Stock Pro but not SEBI registered, right? A lot of fake channels have come up, and please see whether they are SEBI registered or not. And you will see always my pictures on my channel. If the channel doesn't have any picture of mine, means it's a fake channel. Take care, be prudent, be wise. In stock market, a lot of people are there to cheat you. Take care. Bye bye. See you.